foundation settlement, right? अच्छा जी, you would remember this curve on the left side. This is a effective stress versus void ratio curve you obtained from which type of test? From which test? Can anybody answer? Can anybody answer? कोई बता सकता है कि ये कर्व जो फिफ्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा है कौन सा? अच्छा जी, ठीक है, कंसोलिडेशन टेस्ट सर। और ये अच्छा, और ये राइट वाला कर्व जो है ना वो किस टेस्ट से आपने ऑब्टेन किया है? ट्राइएक्सियल सर। सर ये सेम ही है लेकिन लॉग लिए। ये दूसरा आंसर किसने दिया है? दूसरा आंसर किसने दिया है? कौन कौन आंसर दे रहा था? सर कौन सा वाला? कौन आंसर दे रहा था? मंसूर। दो बंदों ने बात किया ना जो कौन सा आंसर? सर ट्राइएक्सियल वाला। आप बताएं आपने क्या बोला था? ट्राइएक्सियल शमरोज ने बोला, और दूसरा किसने बोला? मैंने कहा था सर कि इसका लॉग लिया हुआ है। आपका क्या नाम है? मंसूर। मंसूर, हाँ मंसूर, आपने ठीक बात की। और ट्राइएक्सियल तो ऐसे ही, ये वही कर्व है भाई, लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस। पूरा का पूरा एक बड़ा चैप्टर जो कंसोलिडेशन का था फिफ्थ सेमेस्टर में, उसका कर्व है, ये उसका कर्व है, वही आप भूल गए हो। ट्राइएक्सियल कहाँ से आ गया? ट्राइएक्सियल को इस तरह दिखता है। अच्छा जी, तो देखें इसमें ये रिकम्प्रेशन कर्व है, फिर वर्जन कर्व है, फिर एक्सपेंशन कर्व है, फिर रिकम्प्रेशन, इस तरह। फिर नीचे आए, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, आपके पास एक स्ट्रेस होता है जिसको कहते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर वो इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस दैट हैज acted on the clay, and ratio between the pre-consolidation pressure and the current effective stress, the past maximum effective stress and the current effective stress, is called over consolidation ratio. Normally considered clays are those which are normally considered clays for which OCR, ये गलत लिखा गया है, is equal to 1. Is a clay the present overburden is equal to the pre-consolidation pressure, it is called normally consolidation clay. OCR is greater than 1 for over consolidated clays, but it is equal to 1 for normally consolidated clay. How you can find pre-consolidation pressure? This is the curve you remember from Casagrande construction method. Then you can do some in situ correction, field correction to your normally considered clay curve. You remember this type of construction. And for over considered clay, you have this type of construction. Then there are certain ratios. CC is called recompression index. And this is the equation, if you remember. This is the slope of the virgin curve. And you have compression index. This is recompression, this is compression, this is the slope of the virgin curve, and recompression index is the slope of the compression curve, recompression curve. CC is equal to this equation, where sigma naught prime is the current effective stress, and delta sigma. What is delta sigma? Can anybody say? What is delta sigma? कोई बता सकता है? सेक्शन ई वालों,
It's कि the what is increase delta in sigma? increase in pressure. Increase क्या? सर जो लोड हम लगाते हैं स्ट्रेस सर Increase in stress where? किस चीज में? किस चीज में increase in stress? यार बताओ ना। सो सर जो ऑलरेडी स्ट्रेस लग रहा था उस पे मगर किस उसमें चीज में? इंक्रीज सर सॉइल में सर, सॉइल में। सॉइल में, सॉइल में, सॉइल सॉइल में इंक्रीज इन स्ट्रेस किसकी वजह से? सर इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू व्हाट? सर कोई न्यू New बिल्डिंग वगैरह structure। अगर बनी है तो फाउंडेशन लोड की वजह से। किस वजह? जी सर किस वजह से? फाउंडेशन लोड की वजह से बताए ना यार, किस वजह? हाँ, और फाउंडेशन लोड से पहले कौन सा स्ट्रेस था सॉइल में? ओवरबर्डन प्रेशर सर। पहले उसका अपना था ओवरबर्डन। और फाउंडेशन के अप्लाई करने के बाद कौन सा स्ट्रेस है? प्रेजेंट इफेक्टिव जी, फाउंडेशन के लोड लगाने के बाद सॉइल में क्या स्ट्रेस होगा? सर ओवरबर्डन प्लस इंक्रीज इन स्ट्रेस। यस यस यस, जो कि सॉइल की वजह से है, अपने सेल्फ वेट की वजह से, जिसको हम इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं, प्लस ड्यू टू लोड, बोथ एडेड गिव यू टोटल, बट द चेंज जस्ट डेल्टा सिग्मा, एंड सेटलमेंट अकर्स due to change in stress delta sigma. Because of this, so sigma naught is the pressure due to self weight, effective stress due to self weight, and delta sigma is the change in stress due to foundation. So sigma naught prime plus delta sigma is the total due to effective stress plus foundation. अब ये बताएं, हाउ वी कुड कैलकुलेट डेल्टा सिग्मा? हाउ कैन वी कैलकुलेट डेल्टा सिग्मा? और कोई बताए? कोई एक बताए। जी, सर जितना लोड हम 16 इंक्रीज कर रहे हैं बच्चे जो है ना, सर वो तो हमें पता होगा। जी सर जितना इसमें इंक्रीज हुआ है स्ट्रेस में सर वो तो हमें पता होगा ना सर, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बताए ना कैसे कैलकुलेट होगे? सर वो उन्होंने यार अब बहुत बुरी बात है। अब कोई और बताए। 16 बंदों में एक बताए। जी, अगर हमें जी। टोटल स्ट्रेस का पता हो सर, तो उसमें से जो अगर पहले सर पता हो हमें और इसके बाद जो इंक्रीज की इसके बाद पता हो सर, तो दोनों को मान करके हम हमारे पास डेल्टा सिग्मा आ जाएगा सर। यार बहुत ज्यादा बुरी बात है। देखें, ये इससे पहले जो लेक्चर था, इससे पहले जो लेक्चर, ये सारा लेक्चर, ये सारा लेक्चर, ये सारा लेक्चर, ये सारा लेक्चर, ये किसके मुताल्लिक था? ये सारा लेक्चर जो हमने लिया था, पूरा लेक्चर, ये देखिए, ये क्या था, ये क्या था, ये पूरा चैप्टर जो हमने लिया, ये एग्जाम्पल के एग्जाम्पल जो हमने किए, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल हमने किए हैं,
ये बोसेनिक इक्वेशन किया, ये कर्व ड्रा किया, ये फाउंडेशन है, ये लोड है, ये देखें स्लोप टू वन मेथड है, ये देखें ये इंटीग्रेशन और ये सैमसन रूल, जो इतना बड़ा किस्सा हमने बांधा हुआ था, वो उसकी क्या था, किस लिए था? हाँ, स्ट्रेस फाइंड करने के लिए सर। इतना। तो यार ये कितनी बुरी बात है कि पूरा लेक्चर एक बात पे हुआ है, आप कभी कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस से होगा, आपको पता भी नहीं है पूरा जो लेक्चर हमने लिया था उसका मकसद ही क्या था। ये लेक्चर लिया था कि नहीं लिया था इससे प्रीवियस मंसूर? सर आपने लिया था ये लेक्चर इससे? यस सर। तो ये पूरा लेक्चर किस चीज के मुतालिक था, आपको ये भी याद नहीं है? सर याद है। तो कैसे याद है? आप तो कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस से आएगा। सर वो दूसरे बंदे ने कहा था। खैर जो ये, मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया ना, आपको ये भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, कि लेक्चर किस मुतल्लिक है। मैं सही पढ़ा नहीं रहा, क्या बात है। ये सेक्शन ही आपको मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ाया था। नो सर। 5th सेमेस्टर नो में। सर, यही तो मसला है सर। ना ये मसला नहीं है। इससे पहले तो अभी ये लेक्चर तो मैंने लिया है ना पूरा, स्ट्रेस कैलकुलेट करना, तो आपको तो ये भी नहीं है कि ये सर ये इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया है वो इसी के मुतालिक है, वो मेथड इस्तेमाल करके हम डेल्टा सिग्मा मालूम कर लेंगे। ये आंसर चाहिए था बस। अब पता लगा है, अब पता लग गया है। यस सर। अब पता लग गया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, फिर हमारे पास अगर आपको याद है तो केसेस थी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। आप सेटलमेंट, हाउ यू वुड कैलकुलेट सेटलमेंट, दिस इज कर्व फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले and it uses only CC. This is the equation, and this is the equation you can find consolidation settlement. This is OCC. In this case, this is the case when sigma naught plus delta sigma is less than sigma p prime. You would use this equation. And when it is greater than sigma p prime, you would use this equation. All of these are from your 5th semester, and this is a solved example. So you are asked to resolve this example. You look at the question, right, and you resolve it. I give you 5 minutes, and you resolve it, right?
अच्छा जी, सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया? जी मंसूर, आपने सॉल्व कर लिया? जी सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है? नो कोई सर, मेरा क्वेश्चन तो है? नहीं क्वेश्चन। नो सर। अच्छा, अब ये दूसरा सॉल्व करें जल्दी। इसके साथ you also sketch the diagram, the effect, the graph of log effective stress and void ratio. You also plot the curve. अच्छा जी, सॉल्व हो गया? हेलो? जी सॉल्व हो गया मंसूर? मंसूर? जी सर। जी सर, हो गया। अच्छा, डायग्राम भी ड्रा कर दिया आपने? जी सर।
over consolidated. डायग्राम इस तरह, डायग्राम में प्लॉट करता हूं, यू जस्ट सी इट। ये क्या हो रहा है? ये लॉग इफेक्टिव लॉग सिग्मा प्राइम, दिस इज वाइड रेशियो, राइट। हाँ, बाकी लाइन कर लेते हैं। This is sigma naught prime. This pressure is sigma p prime, right? And this pressure is, which pressure is this? Sigma naught plus change in Which pressure? Yes, sigma naught prime plus delta sigma. ठीक है? So if you see, this is case number 1. The slope of this is CR. The slope of this curve is CR, and the slope of this curve is CC. So you are stressing CR, so you would use only CR, right? Now you just solve this equation, this problem. नहीं, ये तो हो गया है, कौन सा नहीं हुआ? वो इसमें नहीं आया, सारी वो डिलीट हो गया है। Anyway, you got the idea. This is another problem example on use of MV. Okay, we would come to this later. Now let's start consolidation settlement of foundation. Next chapter. This is the problem you last time you did, right? This time we want to find consolidation settlement in 10 feet clay layer. You see this 10 feet clay layer? We want to find consolidation settlement due to the foundation load. We found something for this problem in our last class. What was that something that we did for this soil profile and foundation last time? जी, हमने आखिरी बार लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम, ये सोइल प्रोफाइल, ये फाउंडेशन लिया था और कुछ मालूम किया था। वो क्या चीज थी? सर एवरेज जी, डेल्टा सिग्मा एवरेज। अच्छा, ये कौन बात कर रहा है? ये कौन बात कर रहा है? अच्छा, आफाक अहमद। एवरेज स्ट्रेस मालूम की थी कहाँ पे? सर सेंटर ऑफ फाउंडेशन नीचे। कोई और बताए? जी, कोई और बताए? कोई और बताए? हमने एवरेज स्ट्रेस मालूम की थी ना, किस चीज के लिए एवरेज, किसका एवरेज किसके लिए? ये 10 फीट क्ले लेयर के लिए किए थे। इस 10 फीट क्ले लेयर में जो एवरेज स्ट्रेस इंक्रीज आता है वो 2 मेथड से मालूम किया था। वो कौन कौन से मेथड्स थे?
Sir, Bosniak's method or slope to one method. यस, इससे हमने क्या मालूम किया था? स्ट्रेस प्रोफाइल मालूम की थी। डिफरेंट पॉइंट्स पे जो स्ट्रेस आ रहे हैं वो मालूम किया था, यही है ना? जी सर। फिर सिम्पसन रूल कहाँ इस्तेमाल किया था? सिम्पसन Sir, रूल। area. सर एरिया फाइंड करने के लिए। बोसेनिक इक्वेशन से जो पॉइंट्स आ रहे थे उसका एरिया मालूम, और इंटीग्रेशन जो है ना वो स्लोप टू वन मेथड में इस्तेमाल करते हैं एरिया मालूम करने के लिए, फिर उससे एवरेज स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, वी वांट टू फाइंड कंसोलिडेशन settlement for this soft clay layer. If you remember from Bosenic equation, the average stress increase was equal to, I remember, क्या था, कुछ याद है? 1 point something 1.404 K, sir. ये 1.404 क्या था? 1.404 बोसेनिक इक्वेशन से, और स्लोप टू वन मेथड से ये आ रहा था 1.11 के से। ठीक है ना? तो ये अपने साथ नोट करें, डेल्टा सिग्मा एवरेज फॉर 10 फीट क्ले लेयर इज 1.41 from 1.41 from Bosenic and 1.11 from slope to one method. अब आते हैं, we want to find out consolidation settlement. This is the curve already given. This is the curve. It has a slope CR 0.035 and CC 0.32. Pre-consolidation pressure is given 3 kSF, right? We want to find two things. One sigma naught prime and the other is delta sigma. Delta sigma you already know from Bosenic equation, which is 1.404. Here it is, you see. Let me snipe it. Today my screen writing is not working. I can't work by hand on screen. So there is a bit difficulty. Oh. ये इसमें डेल्टा सिग्मा you already know is equal to 1.414. Yes, average stress increase in 10 feet soft clay layer due to foundation. अच्छा जी, sigma naught prime. What is sigma naught prime? G. Effective overburden pressure. Effective overburden pressure. अच्छा जी, अब इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कैसे मालूम करें? मालूम कर सकते हैं यहां से फ्रॉम दिस सॉइल प्रोफाइल। मालूम करें।
मालूम कर सकते हैं? सर गामा इंटू एच लिख लीजिए। हाँ ना, करें ना बेटा, कुछ तो करें ना। देखें 13.5 इंटू 110, ठीक है ना। फिर क्या है, प्लस 2.5 इंटू, फिर 110 है, बट इट इज बिलो वाटर टेबल, सो 62.4 इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। फिर आपके पास क्या है, प्लस क्या डेप्थ लें? अब आगे जाएं, कोई बताए, आगे जाए कोई बताए। सर 10 क्या मल्टीप्लाई ऐड बाई करूं? 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 110। सिर्फ 110 या और भी कुछ? माइनस 64 2.4। हाँ, मगर ये 10 नहीं है, 10 की जगह 5 है, मिड ऑफ द लेयर, ताकि एक एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे साथ आ जाए, ठीक है ना, एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाए। इस सब को आप डिवाइड करें by 1000 to get values in KSF. इससे आपके पास आ जाएगा, क्या आंसर आएगा? वन 1.841 KSF। देखें ये 1.841 KSF, ठीक है। डेल्टा सिग्मा आपके पास आ रहा है 1.414, तो डेल्टा सिग्मा जमा सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 1.841 प्लस 1.414 इज इक्वल टू, जी क्या बता रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं सर, वो मसला तो ओके सॉल्व। अच्छा, अच्छा, ये दोनों ऐड करें तो इस पे आपके पास आ जाएगा 3.245 KSF, 3.245 KSF। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें, दिस इज केस नंबर 2, बिकॉज सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा पी प्राइम, ठीक है ना। Hence, sigma naught plus sigma p is greater than sigma p prime. Therefore, case number 2. What is the equation for sigma case number 2? Delta H consolidation settlement is equal to CR divided by 1 plus E naught
into H naught into log of sigma p prime divided by sigma naught prime plus Cc over 1 plus E naught into H naught into log of sigma naught prime plus sigma delta sigma divided by sigma p prime. ठीक है ना? इससे DH is equal to something plus something is equal to answer. तो आप ये निकालें, पहला टर्म भी निकालें, सेकंड टर्म भी निकालें और ऐड करें, इसका आंसर निकालें प्लस इसका आंसर निकालें और ये मुझे जल्दी बताएं, जल्दी करें. You calculate and tell me the answer. जी क्या रहा है यार, चुप लग गई है आप लोगों को, चुप लग गई है आप लोगों को. हेलो, सारे चुप हो गए हो, क्या आंसर आ रहा है? चलो छोड़ें, अगर आप नहीं मालूम कर सकते हैं. यस सर. तो आंसर तो दो ना बेटा. ये है, ये नोट करें, अपने साथ नोट करें. यस सर. You compare your calculation with this answer. कैमरा दे ध्यान का और क्लास देखो. जूम करो तो देखो. तो वतختار जूम कम दे और तो देखो पहले देखो कैमरा को देखो. सर सही आ रहा है यही. अच्छा पासवर्ड किधर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभी.
इसमें मैं इसको स्नाइप करता हूं पहले। ये प्रॉब्लम है और अब से व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B so that a settlement of 40 mm occurs in 4.5 meter clay layer। आपको ये 4.5 मीटर क्ले लेयर नजर आ रही है, इसमें 40 mm to cause a 40 mm settlement in this, how much should be the value of B, right? So first of all we have to find out these consolidation properties of this layer. You see nothing is given, no CC, no CR, it is a normally consolidated clay that is given. It is an NCC clay, normally consolidated clay. NCC. It is an NCC clay. So for NCC you have only CC. So you have to find CC and E naught. First you find CC and you find it from correlation. First you find E naught, initial void ratio. You know that void ratio S into E naught, S is the degree of saturation, is equal to S is equal to G S G into W. W is the Wn is the moisture, natural moisture content. For fully saturated soil, S degree of saturation is 1. So E naught is equal to G into Wn. G is given in the problem, it is 2.65, and natural moisture content is given, it is 29.6%. So the void ratio is how much? You calculate how much? बताएं। CC क्या रहा है भाई? From correlation with liquid limit. Liquid limit minus 10. ये correlation है. From this correlation you can find CC, right, using this. सर ये E naught की वैल्यू 0.78 आ रही है। और इसकी क्या वैल्यू आ रही है ये भी लिखें, ये भी बताएं। जी सर 0.176। फाइंड 0.176 7 176
ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम. ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, now tell me how to find, let's use slope to one method. Can I take it out? कैसे मालूम करेंगे स्लोप टू वन मेथड से? बी, जी ओके, डेल्टा एच is equal to Cc for normally considered clay, for non Cc into E naught divided by 1 plus E naught H naught. This is the equation. ठीक है ना? But before this, before using this, let's find sigma naught prime at mid depth of बताइए कोई, कैसे मालूम करेंगे? सर 17.29 into 3 plus 17.29 into 3. 1.2 plus 3, ठीक है ना? इसके बाद वाटर टेबल आ जाता है तो 4.5 मीटर डिवाइड बाय 2 बिकॉज एट मिड डेप्थ इनटू 18.86 minus 9.81 is 9.81 is the unit weight of water. क्या आता है इससे? कैलकुलेट करें, क्या आता है? नहीं इस्तेमाल है जी सर 92.9 92.9 अच्छा 92.9 kPa नहीं आता है? यस सर. अच्छा जी, इसके बाद आप मालूम करें, इसके बाद आप मालूम करें अच्छा जी, इसके बाद अब देखें इस इक्वेशन में आपके पास सब कुछ है, डेल्टा एच 40 mm है, ठीक है ना? सब कुछ है सिवाय डेल्टा सिग्मा के, तो इससे हम डेल्टा सिग्मा मालूम करते हैं। इस इक्वेशन से डेल्टा सिग्मा मालूम करें। देखें ये 40 mm है दिया गया है, तो 40 mm को आप डिवाइड करें 1000 पे तो ये मीटर में आ जाता है। सीसी की वैल्यू आपने निकाल ली, उसकी है 0. यार इससे तो 0.36 आता है, आपने क्या लिखा है? सर ये गलत अच्छा लिखी हुई है इधर 9.6 हमने गलती की है, लिक्विड लिमिट 50 है, लिक्विड लिमिट इज 50, इससे आपके पास आएगा 0.36।
ठीक है ना, और ई नॉट आपके पास 0.8784 आता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, देखें सी सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.36 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट 0.784 इंटू एच। एच आपके पास है 4.5 मीटर, थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, इंटू log sigma naught prime sigma naught 92.9 plus delta sigma is not known to you. अब इससे आप मुझे निकाल डेल्टा सिग्मा की वैल्यू निकालें, जल्दी करें, इससे डेल्टा सिग्मा की वैल्यू निकालें। क्या आंसर आ रहा है? ये log 10 है। अच्छा, दिस इज log 10, दिस इज log 10।
अच्छा जी, इसके बाद आपको पास डेल्टा सिग्मा आ गया है. नाउ you use slope 2-1 method to find B. क्या है slope 2-1 method? Sigma is equal to P divided by B plus Z1 divided by B plus Z2. ठीक है ना? तो DS is 9 KSF is equal to P is 580 kilonewton divided by B. You want to find out Z1 is 3 meter. B plus Z2 is 3 plus 4.5 7. So what is now B? इससे कैलकुलेट करें. Find the value of equation. जी, it is 2.73 meter. It is 2.73 meter. So this is how you would calculate B using slope 2-1 method to find consolidation settlement, to find the B that would cause 40 mm of consolidation settlement. Now, question is how we can do it using Bosniak equation, not slope 2-1 method. So the procedure is altogether different. Now, slope to Bosniak equation, using Bosniak equation. Using Bosniak equation, right? For Bosniak equation, you would first divide this. Oh my God! Divide this layer into different parts. Into 1.5, divide this sub layers each 4.5 meter, 1 meter, right? Each one is 1.5 meter thick. Z here is 0. Z here is 0. At this level,
Z is at this level Z is equal to no. Here, what is the value of Z at this point? What is the value of Z at this point? 3 meter. 3 meter. 4.5 meter. Z is 6 meter. And here Z is 7.5 meter. Right? Now, what you would do, you would assume a value of B. For example, first assumption is B is equal to, our first assumption is B is equal to 3 meter. Sorry. Our first assumption B is 2.4 meter. Okay. After this, second step is to find delta sigma using Bosniak equation and Sampson rule. Delta sigma average from here, Sampson rule is 12.27. After this, you find delta H using consolidation equation, and this comes out to be 48. So our assumption is wrong. Our assumption of B is wrong because we want to get delta H equal to 40. That B, that would give us delta H is equal to 40 mm. So we have to change our assumption and pick another B. Pick another B. Let's assume our second assumption is B is equal to 4.8 meter. Then using equation, average is 0.1 kPa, and delta H is 36 mm. Again, that is wrong. We need 40 mm. Let's do a third assumption, a third trial. B is equal to 7.2 meter. Find delta sigma average using Bosniak equation and Sampson rule. You get 6.04 kPa, and delta H now is 24 mm. Again wrong, but you got some data that you can use. Sir, try B is equal to 4 meter. डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Here B meter and here delta H in mm, right? Here B was
First B was 2.4 meter, and you got delta H equal to 40 mm. Then you got 4.8 meter, and DH equals to 6 mm, and then you got 7.2 meter, and delta H equals to 24 mm. You can plot this. You can plot this curve like here. Oh my God. Like here. क्या हो गया है? You see, this is plotted, and these 3 points are plotted. Unit B, which has 40 mm setup, so you can bring this line here and read, and B equals to 4 meter. If you use a B value equal to 4 meter, that would give you a settlement of 40 mm. You got the idea? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that is enough. That is enough for you. The other problem you can solve it at home. All of them are solved. All of these are solved here. So you go through all of them at home, and if you have any problem, we can discuss next time. Up to slide number 21. Up to slide number 21. The last problem I would solve it for you, but you can scan because you have done this in your 5th semester. This is the same consolidation settlement form, every degree of consolidation, same graph, same things, right? You can go through all of them at home, and if you have any problem, we can discuss up to slide number 27. All examples are solved. I solved you 2 examples, 2 or 3, rather 4 or 5 examples, and the rest of them you solve it at home. If you have any problem, we would discuss it. Now I would stop recording, and all of you should leave.